Hello everyone, welcome back to Football Unplugged with me Satvik and आज का यार episode will be about Barcelona and whether Barcelona is in a crisis or not. And yes, before moving forward, if you like the videos coming out, and if you like what the channel has to offer, please subscribe, like, and share the video as much as possible. Your love means a lot. And yes, let's dive straight into discussing our beloved club, Football Club Barcelona. यार तो एवर सिंस जब से चावी आए हैं ना बहुत we've seen a lot of transition in the club, right? हमने देखा लायनल मेसी चले गए, बुस्केट्स की रिटायरमेंट होगी, पीके चले गए, जॉर्डी एल्बा चले गए, तो जो बार्सिलोना का कोर था वो चला गया, राइट? एंड चावी वाज लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स, ट्रांजिशनिंग स्क्वाड, एंड बहुत सारे प्लेयर्स थे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तो क्लब बहुत ट्रांजिशन में गया चावी की मैनेजमेंट के अंडर, राइट? एंड लास्ट ईयर आई वुड से लास्ट ईयर को मैं सक्सेस कहूँगा. लीग जीतना वॉज अ ग्रेट सक्सेस. ऑब्वियसली यूरोप में आर परफॉर्मेंसेज हैव बीन पुअर ओवर द लास्ट 4-5 years. एंड अगर आप मुझसे अभी भी पूछोगे राइट नाउ एज वेल, आई फील आर टीम इज़ नॉट अ टीम दैट विल विन द चैम्पियंस लीग और डिजर्व्स टू विन द चैम्पियंस लीग. एंड मुझे लगता नहीं अगले 2-3 सालों में भी ये होगा. बट विनिंग द लीग वॉज सक्सेसफुल टाइम लास्ट ईयर. So, that was something to be very extremely excited about last year under Xavi's management. And हम लोग बहुत excited थे यार, इस season क्या होगा. And इस season का start ना बड़ा, up and down रहा है, जहाँ पे in some matches we've been phenomenal, जहाँ पे हमने 4-5 गोल मारे हैं. But over the last over the last month and a half, our performances have been nothing but poor. आई थिंक रिजल्ट्स वाइज तो पुअर रही हैं, चाहे आप एल क्लासिको देख लो, शाख्तार के अगेंस्ट डिफीट देख लो, एंड इवन द मैच अगेंस्ट आलावेज एंड ओसासुना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हमने इवन तो वो दोनों मैच जीते, बट परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक वीव बीन बिलो पार. इवन दो आई स्टिल थिंक हमको क्लासिको जीतना चाहिए था. आई थिंक वी वर बेटर ऑन द क्लासिको डे. बट अगेन इन टर्म्स ऑफ जस्ट ओवरऑल परफॉर्मेंसेज बहुत ख़राब परफॉर्मेंसेज रही हैं हमारी. तो मैं यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि किसकी गलती है, वेदर इट इज़ ये चावी की गलती है कि प्लेयर्स की गलती है, वेदर इट इज़ डाउन टू इंजरीज और वेदर इट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑल ऑफ दीज रीजंस, राइट? तो आई थिंक सबसे पहले हमको जो चीज़ रियलाइज़ करना ज़रूरी है इज़ ओवर द लास्ट मंथ एंड हाफ हमारे लिए इंजरीज हैव बीन like bad, right? We've lost the most important players in the most important positions, whether it is Pedri and Frenkie de Jong. जब हमको Frenkie de Jong की absolute peak लग रहा था मुझे, he was playing the best football that he's played for FC Barcelona in the first couple of months of this season, and then उनकी इंजरी आ गई, साथ में ही आपके पेड्री इंजर हो गए, लेवेंडोस्की गॉट इंजर्ड, रफीनिया गॉट इंजर्ड. तो आई थिंक इंजरीज का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा है, because for the poor performances जो हमने देखी हैं over the last 2 odd months. But even apart from injuries, I think individual players have also be to be pointed out. And I, as a fan, I'm very honest with myself when it comes to the club. And there are certain players that need to be pinpointed for their performances. Robert Lewandowski for the last 9 months has been nothing short of poor, right? मैं poor word को use करना चाहूँगा, below average भी नहीं use करना चाहूँगा. For what he did at Bayern Munich and जो हमने पहले 6 महीने भी देखा था last season के लिए, his performances have been poor. कोई फर्स्ट टच नहीं लग रहा है, उनका होल्ड अप प्ले बहुत बेकार हो गया, उनकी फिनिशिंग दैट वाज सपोज टू बी द बिगेस्ट स्ट्रेंथ, जो हमको पता है उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो भी बहुत ख़राब हो रखी है. तो if we have to be competitive in Europe and have a chance to win in Europe, we need to sign a replacement for Lewandowski, because जब वो injured थे हमने फेरान को देख लिया, हमने जो फीलिक्स को भी ट्राई करा, but none of them are natural number 9. So we need a number 9. Victor Roque को देखेंगे whether he is the right replacement. But honestly, Robert Lewandowski has been very poor, right? Another player that I would want to pinpoint is Rafinha. Injured थे, but I think Rafinha this season has been losing the ball a lot. उनकी पासिंग नहीं अच्छी हो रही है, जो उनकी आई थिंक लास्ट ईयर उनकी गोल्स इतने नहीं मारे उनकी, बट आई थिंक उनकी जो क्रॉसेस थे, बॉल्स इन द बॉक्सेस थी, वो बहुत अच्छी थी.
but I think this year that has also been very poor. He's losing the ball a lot, probably because of injury हो सकता है ये, but he's not been performing up to the levels that a player of FC Barcelona needs, right? And एक और player जिसने मुझे सबसे ज़्यादा disappoint किया I think is Alejandro Balde. अभी भी मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट यंगस्टर्स, टॉप 5 अंडर 19 अंडर 20 प्लेयर्स में से एक होंगे वो. But I think we have to be honest that this year his performances have been poor, right? Attackingly, I think तेज हैं वो, but you have to be smart with the pace. I think वो just भगा देते हैं बॉल, hopefully अंदर बॉल डाल देते हैं without really aiming for anyone, and that might have worked a lot last year, or बट जब लक आपके साथ नहीं होता है, हिज बॉल्स हैव बीन पुअर, वो पोजीशन लूज कर रहे हैं. डिफेंसिवली अगर देखोगे उनकी पोजीशन, ही सीम्स टू बी आउट ऑफ पोजीशन अ लॉट ऑफ टाइम्स. अगर वो लेफ्ट में डिफेंड कर रहे हैं, लास्ट मैन है, अगर ऑपोजिट साइड से क्रॉस आ रहे हैं, वी सीन प्लेयर्स रनिंग अहेड ऑफ हिम एंड देन स्कोरिंग. तो दीज थ्री आर सम प्लेयर्स हु वर ब्रिलियंट लास्ट ईयर, and just I think they've been nothing short of poor this season. तो I think बहुत important हमको ये चीज़ें address करना before we start blaming Xavi for entirely कि सब कुछ Xavi की गलती है, chuck Xavi out. You have to understand the fact कि उनके पास प्लेयर्स नहीं थे, प्लेयर्स बहुत सारे इंजर्ड थे, जो खेल रहे थे उनकी फॉर्म क्वेश्चनेबल थी, राइट? तो as much as Xavi is to be blamed for some of the things, it's not entirely his fault, right? Now even coming to Xavi as well, right? Even in terms of some decision making, I think in terms of starting 11s, I think थोड़ी बहुत चीज़ें questionable हुई हैं. Whether it is जब रॉबर्ट लेवेंडोस्की इंजर्ड थे, तो I think we could have given a fair run to Ferran Torres as the absolute number 9. chances देते, उनका confidence थोड़ा बढ़ता. I think वो एक बहुत बड़े confidence player है, right? But हमने वो भी थोड़ा shuffle करते रहे. हमने एक मैच में कैंसेलो को विंग पे खिला दिया, एक मैच पे हम यमाल खिला रहे हैं, एक मैच पे हम फेरान टोरेस खिला रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज समथिंग that is on Xavi. I think the selection of 11, the selection of the squad could have been much better during the times of injury. Yes, resources limited थे, but I think it could still have been better, right? I think the biggest miss in this entire bit has been Frenkie de Jong. I think अभी बहुत बड़े मिसिंग एलिमेंट बताऊँ क्या था. आई थिंक हमारे पास एक मिडफील्ड से बॉल कैरियर नहीं था. जो रोल फ्रेंकी डी जोंग इतना अच्छा कर रहा था, गुंडगान इजंट समवन जो बॉक्स में जाएगा. एंड इवन डिफेंसिवली आई थिंक गुंडगान हैज़ बीन लूजिंग अ लॉट ऑफ बॉल्स इन द लास्ट 4-5 मैचेस. सो ही नीड समवन लाइक फ्रेंकी डी जोंग अलॉन्ग साइड हिम. रोमेओ की फॉर्म भी hasn't been the best lately. तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं that hasn't really worked out for Barcelona, and Frenkie de Jong has been a big miss. But does that mean Xavi should go, or Xavi is not the right manager? No, I think he's done a brilliant job with the limited resources that he's had in terms of players, in terms of injuries, in terms of the financial fair play. जो भी बार्सिलोना की situation है, financial situation है, I think he's done a great job. But yes, in terms of his squad selection, in terms of the players that he chooses to play in particular positions, I think that could have been better. And again, because a players injury से वापस आ रहे हैं, he can rotate the squad more often. उनकी जो substitutions है वो ज़्यादा impactful हो सकती हैं. तो I think now in the next couple of months, if injuries do not happen, I think तब Xavi की हम tactics को ज़्यादा criticize कर सकते हैं, because I think with the resources that we had, I think we did all right. I think form has also got to do a lot with how we've been performing. So I think as and when form आती है, players injury से वापस आते हैं, उनकी match fitness completely regain हो जाती है, I think Barcelona will do much better. But yes, I think थोड़ी बहुत issues हैं जो हमको sort करने हैं. एक और जो issue है that I forgot mentioning, I think defensively we've been conceding more goals. I think लास्ट ईयर हमने इतने गोल्स पूरे सीजन में नहीं कंसीड करे होंगे, ऑलमोस्ट उतने पे पहुंच गए होंगे जितने हमने इस सीज़न ऑलरेडी कंसीड कर लिए हैं.
and honestly nothing is on Mark Ter Stegen. I think he's been absolutely brilliant. क्लासिको में तुम बेलिंगम का जो पहला गोल था उस पर कह सकते हो, बट आई थिंक दिखती लेट है ना जब इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ गोल कीपर, राइट. आई थिंक डिफेंसिव फोर में प्रॉब्लम है, एंड ऑनेस्टली हमारे फुल बैक्स डिफेंसिवली साउंड नहीं है. Even it goes for Cancelo and Balde both, and I think we've suffered in transition in our wings, क्योंकि जब बाल्डे और कैंसेलो दोनों आगे होते हैं, it leaves a lot of space for opposition wingers, and अगर आपने देखा होगा उसी का opposition फ़ायदा उठा रही है. And because Balde has not been in a lot of form, and because both of them are naturally attacking fullbacks, उनकी defensive contribution hasn't been the best. तो possibly Balde अगर out of form है, Cancelo can play on the left, and we can go to a Koundé or an Araujo on the right side to give more defensive solidity. I think ये एक solution हो सकता है going forward. But yes, those are certain problems that Barcelona is facing defensively this season, and that is something that they need to fix really soon. So yes, I think these were some problems जो मुझे लगा Barcelona के लिए है, and honestly I wouldn't call it a crisis right now. Drop in form है, इंजरीज हैं, वो फैक्टर्स हैं, एंड ऑनेस्टली चावी आउट वाला चीज़ यहाँ पे अभी आने भी नहीं चाहिए. आई थिंक कई लोग कर रहे हैं, बट आई ऑनेस्टली थिंक ही इज़ डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब. अटेटा को भी आर्सेनल के साथ जो कर रहे हैं उस पर टाइम लगा था. ट्रस्ट इन चावी बॉल इज गोइंग टू गेट अस रिजल्ट्स इन द लॉन्ग टर्म, and he knows what the Barca philosophy is. So we need to trust him. We need to give him more time with the best squad available to him, and then come to a conclusion. But yes, I hope we win the league. Europe mein I'm not very hopeful, very honestly. I think even a quarterfinal would be a good result for us. So let's see what happens in the Champions League. Fingers crossed. But yes, this was it for today's video. Thank you so much for tuning in, and feel free to drop in your comments, like, share and subscribe. Football Unplugged, a lot of great content coming up. Thank you.